coming with this franchise concept. जैसा कि आपने देखा होगा कि मार्केट में आजकल जो है बिजनेस को थोड़ा सा डाइवर्ट किया है लोगों ने और ज्यादातर फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके और उसके पहले कि मैं आपको अमेजिंग फैक्ट्री के बारे में डिटेल करूं और चीजें बताऊं, मैं चाहूंगा कि मैं कम से अपना अजमेरा ग्रुप के बारे में, अजमेरा फैशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, हमारी कंपनी के बारे में, हमारे ग्रुप के बारे में, हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में, और उसके बाद हम जरूर डिस्कस करेंगे अमेजिंग फैक्ट्री के बारे में, सो दैट यू विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर कमिंग विद एंड व्हाट एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट वी आर कीपिंग इन माइंड। तो आई स्टार्ट। आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि अ फैक्ट्री आउटलेट ऑफ अजमेरा फैशन अमेजिंग फैक्ट्री, ये हमारा ब्रांड नेम है जो हम फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट के तहत लेके आ रहे हैं। और इसमें जो है सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि अमेजिंग फैक्ट्री एग्जैक्टली जो है क्या। तो अमेजिंग फैक्ट्री, मैं आपको इसको आई विल रीड इट फॉर यू। दिस अमेजिंग फैक्ट्री इज अ ब्रांड ऑफ अजमेरा फैशन, जो कि हमारे अजमेरा फैशन का एक ब्रांड है। Ajmera Fashion is the renowned manufacturer of saris, kurtis, lehengas, suit, etc. in Surat. Basically, we are a Surat-based company, Gujarat-based company, जो कि spread across 10,000 plus square feet area with export of 30 plus countries across the world. And many firsts in this textile of domain. To its credit, Ajmera Fashion is today widely recognized as a leader in its league. And the second thing is that from modest beginnings in 1992, when we have already started, Ajmera Fashion has evolved with these times to occupy a leadership position today. Even as a group continues to grow from strength to strength, Ajmera Fashion continues to be guided by an unwavering commitment to be value to everyone: retailers, dealers, wholesalers, customers, employees, and society at large. So you'll be definitely you'll be getting what exactly we are coming with and how we are going to expand our business. Coming on to the next slide, which is going to explain about Amazing Factory specifically. As a specific category, if we talk about the Amazing Factory under the umbrella of Ajmera Group, the Amazing Factory, with a dedicated team of expert designers, Amazing Factory offers best range of ethnic wears for all season and occasions. So it is a kind of a selective and collective kind of a garment which is going to distribute through our Amazing Factory outlet, through our franchise division. Amazing Factory committed to quality and customer satisfaction. Since beginning, when we have started our journey, we believe and we are very confident, and it is our passion. Whenever we deliver to any of the client, we should be committed to quality and the customer satisfaction, which is we are keeping at top of the mind, and we keep on the top priority. And Ajmera is a multi-place organization providing an array of products such as fancy printed saris, printed regular wear saris, latest designer party wear saris, fancy cotton kurtis, fancy anarkali, and definitely what you can see on the slide itself, wedding lehengas, fancy lehenga, designer, a lot more things. And again, I'm coming to back to this thing. I mean, it's a range of, what we call it, the fashion designing or ladies wear category. What is our philosophy as a company, as a group, and as a service provider to our customer in a changing economic landscape? Textile industry need to adapt their business models to succeed. Ajmera Fashion brings the most inspiring insight and best practice solutions based on more than 18 years of expertise to address the entire product life cycle. Ajmera Fashion believes a better process results in a better product. So this is the thing. And coming on to the next thing, what exactly we are, how we are placed in the market, and what exactly we carry in our bag as a group. There are a group of companies, and to start with, this is Ajmera Fashion, as I already told and described you about. The second is Ajmera Digital. Here in this division, we are taking the saris into the printed kind of a concept, which definitely anybody would like to understand the whole of the detail of this, definitely we can discuss after the session. And probably I'm going to provide you my details and contact number and everything. So wherever you think apart from the normal discussion, if you would like to know what are the details like, definitely I'll be happy to help you to explain you what exactly the group of companies looks like.
Third one is the Ajmera Natural. This is again, we are processing the oil through the groundnut, and we are processing and distributing, and we are exploring the new market of through distributors and retailers in this particular arena. Ajmera Retail, as everybody knows already, I described you about. And after that, last but not the least, this is the Ajmera Infrastructure. This is the real estate division. Under this, definitely we are coming with a real estate with colonies and villas and houses. Probably anybody wants to would like to spend in this and would like to join as a member, as a purchaser, definitely he is most welcome to join us. Here, few of the things we'd like to share with you with a pride, and there are global recognition, honors, and awards for your acknowledgement, and probably you will be more in a position to understand how the group is taking place. I mean, through a new journey, along with the supports of a kind of recognition through awards and recognition. There are few pictures just to share with you, and probably you will be understand what exactly we are carrying our picture, our image in the market. This is the Indian different recognition awards are there. Probably you can go through it, and this is the thing. This is the third slide. Here you can very well see that every picture, it is our CEO, Mr. Ajay Ajmera, who is the person who is the behind the source, the main source. I mean, who is the motivation figure for us, for the entire group. I mean, he is already taking and receiving the awards on behalf of the industries, behalf of the fashion industry, and definitely through the very well-known celebrities in the society. This is the Forbes. Everyone knows and everyone acknowledge the brand name of Forbes. This is the thing. I mean, the best view comes after the hardest climb. Is the tag. I mean, this is the title under which our CEO's entire story, the success story, has been already written, and the Forbes India magazine has already recognized and published in their renowned and esteemed magazine. This is our honorable finance minister has already given the award to our CEO for being different categories. I mean, putting fingerprints to follow the other people, the other industries, and putting a brand as a brand in the market. So this is again a kind of PC Power Corridors. It's again a kind of a platform where we are recognized through the market and through the industries and through the industry as an award, and we feel proud of it. Now coming on back to the business now. If we talk about the business, everybody, when anybody who wants to start the business, the main thing is that everyone thinks what is the growth opportunity. This is the basic question which every businessman thinks about, and definitely very much worried about. In today's scenario, if you talk about the Corona scenario, so everyone is very much feared about if anybody wants to invest in the business. The main thing is that whether my money is safe or not, whether the growth opportunity is there or not, and whether I'm for a longer term I'm going to earn or not. So this is the growth opportunity. I'll start for you and I'll read it for you. In order to start a thought process, we need to know the need and understand the target customer. Okay, who is the exact and the target customer for us, and the target market to begin with. It is not only the target customer, it is also at the same time, it is the target market has to be very well defined, where if I am going as a entrepreneur, if I am going to invite in the market to the people to invest the money, this clarity has to be very well with the customer who is going to invest us. Understanding says that the investment in current scenario is not a problem, but lack of trust, insecurity of money invested, growth and a long-term returns on investment fears the investor to move forward. It is very well matched with the current scenario, as I talked about the Corona scenario, and the money is hardened money. Only the person who can understand the problem occurs while earning the money.
He is the person who can understand the value for money. Importantly, the lack of guidance to choose the right business. This is a very valid point. Or the product category also create confusion among the business seeker and sometimes a wrong choice. Wrong choice. I'm repeating it, not a wrong decision. Sometimes what happens is we are choosing a thing, or choosing a business, maybe a wrong choice, but it is not wrong decision, because as a businessman, definitely every businessman takes a right decision. Only the time matters, that particular decision is right or not. Made them to feel guilty within of lacking business acumen and inability to run a business, and to prove them as a poor entrepreneur. What happens, suppose you have taken a wrong choice, by different factors occurs at that time, and which makes you feel sometimes you are not a pure kind of a businessman, you are not a good entrepreneur, and this is the kind of inferiority complex occurs, exists in anybody who fails in the business as a businessman. Therefore, there is a requirement occurs either side to choose as far as any businessman is concerned and offer a business as far as the person who's going to offer the business, which is well guided or having foolproof in itself, and also all time and evergreen product category to go with to grow. As I at the initial beginning of growth opportunity slide, I talked about the growth opportunity. So it is again, I'm talking about the growth. Further to explain the market segmentation, you can very well read this here. According to TechPack, it's a survey, company, the total Indian ethnic wear market. Now we are coming and talking about the business, so that you can very well understand what kind of business as an industry is there, and what is the wide and range of the business as in the current scenario. We can talk about is valued at rupees 70,000 crores. This is women's ethnic wear has an 85%. That if you talk about in terms of amount, this is rupees 59,500 crores. There is the share in the market and expected to grow at a CAGR of 10% till 2022. The ethnic wear market is dominated by sari with a share of around 47%, followed by salwar kameez and lehenga. This is the kind of survey, this kind of research we normally share with the entrepreneurs, with the businessmen like you, so that probably you can understand if in future, after completion of this particular session, you'll be able to understand what exactly, which kind of industry I'm going to invest with. While sari dominates in the east, west, and south, northern India witnessed majority of demand for salwar kameez and kurta. This is very well-known fact and everybody knows about it. The demand trend across the region has been evaluated along with the comparative analysis with respect to the factors influencing the preferable choice of ethnic wear. Second thing, and this is very important thing, study also includes the insight on the various market strategies and distribution channel of by market players to attract the potential customers in this growth market. And the last but not the least, again, I'm coming on to the main drivers of fashion growth are increasing population, increase in income levels, rapid urbanization, improving demographic, increase organized players, and increase penetration of retailers into smaller cities. So the slide says probably if I'm going to start and grow our business at the smaller market, the rural market, suburban market, or upper urban market is the main target areas as far as the Amazing Factory is concerned. When I talk about the Amazing Factory, so the question occurs in the mind of the businessman: why Amazing Factory? It is very, valid question, and I'm going to give the answer. We at Ajmera given a long thought as to what to offer to the entrepreneurs and for the market as well. When we talk about market as well, so we do understand it is a long-term business and definitely a market for generations. Definitely, I'm going to talk about in coming of the slides now. So we thought and chosen a well-accepted, very traditional, trustworthy, and with proven track record business to offer. This is the punchline. Definitely, I'm going to describe you in a very broad manner now. Since long, very long, and since the business was called Kapde Ka business,
and the businessman was known as Kapdewala. But with the changing time, you need to understand, but with the changing time and on the basis of society needs in the current scenario, this business has also changed its shapes and designs, but keeping the values and its nature of being Kapdewala intact. We also offer the same traditional, trustworthy, and need of the all-time business, wrapping in altogether new flavor, and we call it ethnic wear business opportunity. I read it again for you. This is ethnic wear business opportunity from Ajmeras to all in the society. We owe to with our expertise in the industry. Being into the society, being as a businessman, definitely times comes when we need to repay what we have earned from the society, from the business. And here we see the business and its growth while offering this opportunity to you people, to businessmen, to entrepreneurs, and we name it Amazing Factory. When we call it Amazing Factory, definitely it is very, very clear. It is a long-term business and a business for generations. Very clear, very crispy. I mean, very jestful rather, I would say. Our support. The second thing, as a businessman, definitely it comes in your mind. Definitely when the company हम शुरू करने जाएं, तो company हमको क्या support करेगी? Investment तो definitely हर company के बारे में होता है. मगर what kind of support we are going to provide to the people? तो store layout इस Amazing Factory के संदर्भ में definitely I would like to tell. सबसे पहला होता है स्टोर. जिस जगह पे हम काम करने जा रहे हैं, वहां का स्टोर का जो लेआउट है, वो उसका सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा. उसका इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनिंग, उसकी विजुअल ब्रांडिंग, ताकि वो जितना विजिबल लगे, जितना प्रेजेंटेबल लगे, और वो जितना मार्केट में जितनी जल्दी आई कैचिंग शेप में आता है, वो सब कंपनी का सपोर्ट से रहता है. उसके बाद रिटेल सेल्स का सॉफ्टवेयर. आज की डेट में अगर हमारे साथ सबसे बड़ी चीज आती है कि हम ट्रांसपेरेंट हैं या नहीं, तो वो आज की डेट में हम टेक्निकल अपना सहारा लेते हैं, जो और उसमें हम ये कहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ताकि आप भी देख सकें कि क्या बिजनेस हो रहा है और हम भी जान सकें, आपको बता सकें क्या है. तो डेफिनेटली वी टेक द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर. उसके बाद हम जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन, जो आपका जो प्रोडक्ट कैटेगरी जो सेलेक्ट करी है, जो वहाँ पर स्टोर पे लॉन्च होने वाला है, वहाँ आपकी दुकान तक पहुँचाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर काइंड ऑफ सपोर्ट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इट टू यू. उसके सेकंड थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि वहां पे जो स्टाफ रहेगा, डेफिनेटली इट इज योर बिजनेस, यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू रन द बिजनेस. आप ही लोग हैं जो बिजनेस चलाएंगे, मगर आपके पीछे आपके लिए हमेशा शील्ड की तरह, सपोर्ट की तरह कंपनी खड़ी है. आपके स्टाफ के रिक्रूटमेंट के लिए, आपके मैनेजर के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए जो शोरूम पर रहेगा, उसका रिक्रूटमेंट करना, उसको समझना कौन सा आपके स्टोर के लिए ठीक रहेगा, किस तरह का प्रोफाइल सूट करेगा, कितनी नंबर्स रहेंगे, वो सारा सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा. उसके बाद में उनका रिक्रूटमेंट के बाद में उनका सेल्स और प्रोडक्ट ट्रेनिंग वो हमारी तरफ से रहेगी. कंपनी पूरा सपोर्ट करेगी, उनको ट्रेन करें ताकि वो प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, सिनेरियो के बारे में और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन, कस्टमर डिलाइट के बारे में उनको अच्छी जानकारी और वो कर सकें. उसके बाद में जो एक और मेन चीज आती है, जब हमारी स्टोर पे जो हमारे मेंबर्स काम करते हैं, हमारे स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं, तो उनके मन में ये नहीं रहना चाहिए कि भाई हम सिर्फ काम कर रहे हैं, टारगेट्स अचीव कर रहे हैं. तो टारगेट्स अचीव कर रहे हैं तो हम अचीवमेंट रिवॉर्ड्स वो क्या होने चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, किस किस समय पे देने चाहिए, ताकि उससे मोटिवेशन न सिर्फ स्टाफ का होता है बल्कि हम और आप भी मोटिवेट होते हैं उससे. उसके बाद में जो आजकल सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और अगर हम टोटल एक कॉमन नॉर्मल ट्रेंड लेके चलें, तो टोटल बिजनेस का करीब 60-65% मोर देन कमिंग अप टू 70% वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू रन करता है. तो वो सपोर्ट हमारी तरफ से रहता है. नॉर्मली एक बहुत ही छोटी सी चीज होती है जिसको हम कई बार अवॉइड कर जाते हैं, नेग्लेक्ट कर जाते हैं, कि जब कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ शॉपिंग करता है, तो हम अपने बड़े बॉस में देखा होगी, वहां पर अक्सर कई बार ये होता है कैरी बैग्स बिकम्स अ प्रॉब्लम. तो वो एक सपोर्ट है जो हमारी तरफ से रहता है. बहुत ही छोटी चीज है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कस्टमर के लिए जो वहां पर खरीदने आया हो. प्रोडक्ट लाइन. उस स्टोर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि हमारे ग्रुप में ये है, और इस प्रोडक्ट पर्टिकुलर रेंज में जो लेडीज एथनिक वेयर में हम बात करते हैं, उसमें साड़ी है, कुर्ती है, कुर्ता सेट है, अनस्टिच्ड सूट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद टॉप्स है, ट्यूनिक्स हैं, पैंट्स हैं, लेगिंग्स हैं, दुपट्टा है, फैब्रिक्स है, गाउन है,
क्रॉप टॉप्स है। ये एक प्रोडक्ट रेंज है जो आप किसी भी स्टोर में, कोई भी कस्टमर एज ए कस्टमर, चाहे मैं आप किसी स्टोर में जाते हैं तो हमको ये जरूरत होती है, अगर हम लेडीज एथनिक वेयर की कैटेगरी में जा रहे हैं तो ये माइंड में रहता है कि ये सब चीजें एक स्टोर पे होनी चाहिए। तो दिस इज दी थिंग। नाउ कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच इज वेरी मच रिलेटेड विद यू पीपल, जिसके लिए हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए, जिसके लिए हमने आपसे समय मांगा और आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद के साथ मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर फ्रेंचाइज का जो डिटेल है, किसी भी फ्रेंचाइज को शुरू करने के लिए जो जगह हमको चाहिए होती है, दैट इज वो स्पेस का जो रिक्वायरमेंट है वो 600 स्क्वायर फीट का है। और हम आपको ये प्रेफर करेंगे, हम आपको सजेस्ट भी करेंगे कि कॉमर्शियल प्लेस हो, क्योंकि रेजिडेंशियल में प्रॉब्लम खोलने की नहीं होती, मगर उसको ये होता है कि लॉन्ग टर्म में रन करना और उसमें जो है हमको बिजनेस को दिखना, और लॉन्ग टर्म के बिजनेस के लिए कॉमर्शियल प्लेस, इसलिए हमने उसको हाईलाइट करके दिया हुआ है। किसी भी शॉप का जो फ्रंटेज है वो मैटर करता है उसको रन करने के लिए, तो फ्रंटेज हमने मिनिमम लिया हुआ है 16 फीट का। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका हमने ब्रेक किया हुआ है। एक इन्वेस्टमेंट जो है 11 लाख का है, इसमें प्रोडक्ट एंड प्रमोशंस आते हैं। दूसरा जो फ्रेंचाइज फीस है दैट इज 4 लाख रुपीज। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका, देयर आर 2 कैटेगरीज। वन कैटेगरी में आपका 11 + 4 15 लाख आता है। उसके बाद का जो आपने लाइन देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट कॉस्ट एक्स्ट्रा होता है, ये अराउंड अप्रॉक्स करीब 15 लाख का आता है। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज गोइंग टू अराउंड 30 लाख। तो जो इफेक्टिव कॉस्ट होती है, जिसको आप इफेक्टिव कॉस्ट बोलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 15 लाख। उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है। मैं आपसे ये जरूर बोलूंगी कि 1 बाय 1 आप इसको, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जाके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं आपको अपना नंबर भी शेयर करूंगा, अपना ईमेल आईडी भी शेयर करूंगा। अगर इस सेशन में कोई चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, कोई आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, तो वो अलग से इंडिविजुअली एड्रेस होंगे। और जब तक आप पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होते, हम कोशिश यही करेंगे कि आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करें। सिर्फ प्रेशर कन्विंसिंग नहीं हो, तो आपको लगे कि नहीं हम एक अच्छे बिजनेस में, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस में हैं, तो आप पूछ सकते हैं। वो इस सेशन के बाद में डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल। इसके लिए आपको मैं अपना डिटेल बता देता हूँ। हमारा जो कांटेक्ट करने का जो है, हमारा जो हेड ऑफिस है, जैसे मैंने पहले बताया कि वी आर सूरत बेस्ड कंपनी। तो हेड ऑफिस का एड्रेस है 407 SNS प्लैटिना वेसू, सूरत, गुजरात। फ्रेंचाइज ऑफिस जो है हमारा यहाँ लखनऊ में है, यूपी के कैपिटल में। हमारे यहाँ पर 5th फ्लोर में है, जो कि लखनऊ में है। और उसमें जो नंबर दिया हुआ है आप नोट कर सकते हैं, उस नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं आपको अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो स्पेसिफिक है, मेरे ख्याल में इस एक्सप्लेनेशन के बाद में काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आप इस नंबर पे इस सेशन के बाद में बात कर सकते हैं, ईमेल हमको ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको इसके बाद में अपने कांटेक्ट करने के बाद में ईमेल आईडी आपको शेयर कर दूंगा, डेफिनेटली वी कैन टॉक अबाउट। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अशोक साहब, Ashok sir. Thank you, sir. This from my side. I would like to request to the